Hello and welcome everyone to BN by IAS. So in this series, we have been discussing approach to answer writing, like how to write good answers in the mains examination of UPSC. See, आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम जीएस पेपर 1. सी वी हैव बीन टचिंग डिफरेंट जीएस पेपर्स. ऑफ कोर्स जीएस पेपर 4 को अभी टच नहीं किया है. I'll touch the some of the questions from this particular section also, but उससे पहले इसका जो अप्रोच है, मतलब पर्टिकुलरली एथिक्स पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए कैसे अप्रोच रखना है, उसके लिए एक जनरल वीडियो बनाऊंगा. देन वी विल गो टू द एथिक्स क्वेश्चंस. चलो आज का क्वेश्चन है, सी दिस इज फ्रॉम जीएस पेपर 1, पर्टिकुलरली योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पर्टिकुलरली सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स 19th सेंचुरी में जो रिलीजियस रिफॉर्म हुआ था 19th एंड 20th सेंचुरी में, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन. 2021 में पूछा है. द क्वेश्चन इज ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल मूवमेंट एंड ब्रह्म समाज. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. एज यूजुअल अप्रोच क्या रखना है इसका, मतलब स्ट्रक्चर क्या है. इंट्रोडक्शन में वी विल गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, होता क्या है ये एंड व्हाई दे स्टार्टेड. देन बॉडी में हमारा मेन फोकस रहना चाहिए. सी यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ. सी सेम यहाँ पर बॉडी में ट्रेसिंग द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन जनरल रखेंगे हम, जनरल फॉर्मेट में. एंड स्पेसिफिकली हम किसके बारे में बात करना है, वी नीड टू एम्फसाइज ऑन यंग बंगाल मूवमेंट एंड ब्रह्म समाज. इनके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे एंड देन their contributions. Then finally, we will be concluding by highlighting the impact of these socio-religious reform movements on the society. Okay, this is the entire approach. So let us begin with the model answer. See, introduction में हम क्या लिख रहा है, we are writing about socio-religious reform movements. See, they arose in India during the caste-ridden and rigid society, and it also a kind of a reaction to the colonial rule, क्योंकि वहां पर काफी discrimination हुआ करता था. See, here the discrimination is not only by the outsiders like colonial rulers, but even within India, within the segment of the society, different people used to discriminate the lower sections. So as a result of it, various reformers like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Dayananda Saraswati, these people, they come up with, like they are the torch bearers, they came up with ideas to change these age old traditions such as sati, child marriage, or to encourage widow remarriages, or to discourage this female infanticide, etc. So that's how it came into being. Now this is the little bit of introduction by emphasizing on these important prominent persons. अब देखो यहाँ पर हम डिस्कस करना होगा कि वाई दे गॉट राइज, बिकॉज उनका जो ऑरिजिन वी हैव टू ट्रेस इट, वी हैव टू ट्रेस द growth of it, growth and development of the socio religious reforms. So let's look at what are the points that has led to the rising and growing of these socio religious reform movements. सबसे फर्स्ट देखो मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन. इस टाइम पीरियड पे इट स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग द मॉडर्न वैल्यूज. जैसे वेस्टर्न वैल्यूज जो है, इक्वालिटी वगैरह, इनको लेकर आ रहा था. सो व्हेन वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, वी स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द सेम. ठीक है, many of the intellectual people asked for the same rights. Similarly, इसी टाइम पीरियड पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो या फ्रेंच रेवोल्यूशन, अदरवाइज रशियन रेवोल्यूशन, दीज हैव इंस्पायर्ड आवर इंटेलेक्चुअल्स. सी इस टाइम पीरियड पे वेरियस बुक्स एंड वेरियस रेवोल्यूशंस डन बाय मेनी पीपल एंड देयर आइडियाज has actually influenced many of the intellectuals in India as well. So these people also started fighting for their rights. ठीक है. Then similarly, work of the missionaries. See, जो Christian missionaries है, they started also spreading the messages like equality, modern democratic values वगैरह जो है, इनको spread करना start किया है. So when these people are working in connection with these missionaries, they came in contact with these modern democratic values and they started demanding for the same. And many of the people also fought for it and also put up efforts to change the traditional uh, customs which are no evil in nature. ठीक है. Then Orientalism, जैसे उस टाइम पे some of the colonial people like British administrators were supporting the
vernacular practices or the local traditions. See, India is a land of rich tradition and customs, and a lot of development has already happened here. So इनका colonial support की वजह से, जैसे इंडस वैली civilization के excavations हुआ है या यहाँ का monuments है उनका preservation किया है, so through them एंड इवन वेदास, जैसे वेदास को स्टडी कर रहे हैं, उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं, थ्रू देम ए सेंस ऑफ प्राइड हैज बीन no pride and self esteem is created in the local masses. So there is a kind of feeling that we are less to no one, like we are also equals with the colonial rulers as well. So ये वाला आया था. As a result of it, the intellectual people, they have initiated and they have taken up the steps and tried to bring the reforms. So that's how these socio-religious reform movements rised and they started growing. Okay, so these are the main points which contributed. Now हमारा main focus जो है, we have to give special emphasis to Young Bengal movement and Brahma Samaj. Let us look at Brahma Samaj. See, when we talk about Brahma Samaj, थोड़ा सा राजा राममोहन राय का contributions डालेंगे. So he is the person who has established 1815 में as a आत्मीय सभा, he has established it. ठीक है, आत्मीय सभा, and then in 1828 it converted into ब्रह्म समाज, राइट. सो इट्स का मेन मोटिव ये है कि वर्शिप ऑफ एटर्नल गॉड, मतलब वो भी फॉर्मलेस एंटिटी, मतलब इट इज नॉट एम्फसाइजिंग ऑन एनी आइडोलट्री और रिचुअल्स, रादर जो भी जितने भी रिलीजियंस है, बिकॉज दिस पर्सन ही हैज रेड ऑल दी sacred books. So उनका क्रक्स जो है, क्रक्स इंफॉर्मेशन से ही वाज एस्टैब्लिशिंग दैट something which is core of all these religions, उस पे ज्यादा बिलीफ रखने का. And however this person is against this priesthood, rituals and sacrifices etc. So that is first thing. Second है कि greatest achievement of Brahma Samaj is abolition of sati with the help of William Bentinck, the then governor general. ठीक है, abolition of sati has happened in 1829. Apart from that, he has also fought for like women education and then widow remarriages, abolition of polygamy, ठीक है, and right to inherit the property by the women. ठीक है, इन सब के लिए इन्होंने फाइट किया था. And at the same time, this led to the emergence of rationalism and enlightenment in India, which indirectly contributed to the national movement. So यहाँ पर देखो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल और साथ साथ में दिस रिफॉर्म्स, दे वर गोइंग हैंड इन हैंड. ठीक है, so both of them are going hand in hand and it has become part of it, like social reform जो है, that has become part of the fight against the British. जैसे डिस्क्रिमिनेशन पे हम फाइट कर रहे हैं वहां पर ब्रिटिश के अगेंस्ट, सो सेम डिस्क्रिमिनेशन वी कैन नॉट हैव इन अवर सोसाइटी. दैट्स द कोर आइडिया. इवन व्हेन महात्मा गांधी केम, he has also fought against this no untouchability, right? So it has evoked this national movement. Then it was the forerunner of like social, religious and political movements of the modern India. इसीलिए we regard Raja Ram Mohan Roy as the modern man. ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न मैन भी कहते हैं. ठीक है, these are all the contributions from Brahma Samaj side. Now the second one is Young Bengal movement. See, Young Bengal movement, it was established by Henry Louis Vivian Dirazio. इनका फॉलोअर्स को डिराजियंस भी कहते हैं. And he has joined the Hindu College of Calcutta as a teacher, and he promoted the radical ideas through his teachings by organizing an association for debate, discussions on literature, philosophy, history, science, etc. See, particularly he, like name itself is suggesting Young Bengal, right? He motivated the young people to take up the arms and no, to take up the or to question the set the present customs which are evil in nature, which are not social in nature. ठीक है, and he inspired his fellow followers and students to question all the authority. Even Vedas को भी ये question किया है, on what authority, on what basis you are saying कि if it is given in the Vedas, how it is correct. We need explanation for that. So that has invoked a kind of inquiry, scientific inquiry.
and they cherished the ideals of फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां से हमें इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ये सब मिलता है, ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है, ब्रदरहुड, ठीक है, ये वाला आइडियल्स को दे चेरिश्ड इट, एंड लिबरल थिंकिंग ऑफ द ब्रिटेन. See, he died of like cholera at a young age. Otherwise, it would have been even further contributions could have come from this particular organization. So that is one of them, and they are like a revolutionary. Like इनके साथ साथ युगंधर and यंग बंगाल movements जो है, they are revolutionary movements, and they also brought lot of change in the society. So these are the main contributions of ब्रह्मो समाज and यंग बंगाल movement. अब देखो इनका कंक्लूजन कैसे करेंगे. अपार्ट फ्रॉम अटैकिंग दी सोशल इविल्स सच एज जो एग्जिस्टिंग था उस टाइम पे, सुपरस्टिशंस है, अनटचेबिलिटी है, पर्दा सिस्टम है, सती है, चाइल्ड मैरिज है, इनके अलावा दे आल्सो हेल्प्ड अस like fighting against the British government so that we can have this national feeling, because ये discrimination कम करके they were uniting all the masses, ठीक है. So this unity has helped us in developing this nationalistic tendencies and nationalism, and that helped us in fighting the British government. So this is how we can conclude it. I hope this is clear. तो आज का सेशन के लिए यही क्वेश्चन है. So if you have any queries or any questions to be answered, please put it in the comment section. That's it. If it is useful, just give a like and subscribe to the channel and stay tuned for coming videos. Thank you very much, guys. See you soon. Bye.